Can anybody tell? So this diagram we had seen earlier as well. So this is the diagram of input tax credit. So what we are going to do, we are going to utilize the input tax credit. As we have already discussed, GST is only one tax for one nation. So whatever are the cascading effect which were earlier in the previous tax system, all this kind of cascading effect we have removed by the GST. Now, so if you want to produce one goods or one product, at that time this product, finished product, goes through the various stages. So stage one is the manufacturer. Manufacturer is the person who will purchase a raw material, getting this, and he will process on the raw material and he will prepare the finished goods. Then the goods which is finished product, which will be sold through the market through the dealer or wholesaler. Okay. So from manufacturer, this chain goes to the retail wholesaler. Then wholesaler is the person who will purchase bulk orders. Wholesaler is the person who will purchase bulk orders. Okay. And from this wholesaler, the same product which is produced, which is procured from the manufacturer, it will be sent to the retailers. Retailer means what? It will be in small number of quantities. Getting this? So retailer is the person. So entire order of wholesaler will be divided among so many number of retailers. So retailer is the next participant of this chain. And last, retailer is the person who will finally sell this product to the consumer. So these are the four stages are available. These are four stages available from manufacturing of the goods to the selling to the goods to the end user. At that time, the input output of first person will be an input to the next person. Then output of next person will be the output input to the next person. In this way, the goods and services will be transferred from one person to other person. One person is the manufacturer, then other person may be wholesaler, retailer, and consumer. Getting this? So whatever tax which is paid by the manufacturer on purchasing of this raw material, this tax will be collected by the wholesaler. Then wholesaler, what wholesaler does? So whatever tax collected by the manufacturer, this tax plus his value addition, the same amount of tax, when he sell the product to the retailer, at that time same amount of tax will be recovered by the retailer. By making the sum of the value addition by the retailer is the person who will sell out this product to the consumer. So whatever taxes paid at the manufacturing stage, at the wholesaler stage, or at the retailer stage, all the taxes will be collected from the end user. End user is the consumer who will consume your product. Means what? Manufacturer transfer the burden of tax towards the wholesaler. Wholesaler will shift this burden of tax towards the retailer, and retailer is the person who will shift this burden of tax towards the consumer. Means indirectly, who is paying tax? Consumer is paying tax. Consumer is paying tax. So this is the chain of manufacturing. You can take an example of service industry as well. Okay. Now, in this case, just look at the values of manufacturer. Manufacturer will purchase goods or raw materials of rupees 1000 from retailer, or he may have his own raw material. मेरा खुद का रॉ मटेरियल रहेगा या मैं बाहर से माल परचेस करूंगा. अगर मैं बाहर से माल परचेस करूंगा, रॉ मटेरियल परचेस करूंगा, एट दैट टाइम आई विल आल्सो शिफ्ट द बर्डन ऑफ आईटीसी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. अगर एज अ मैन्युफैक्चरर मेरा खुद का ही रॉ मटेरियल है और उस खुद के रॉ मटेरियल के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ, एट दैट टाइम I can't shift the burden. I can't take the benefit of input tax credit. वो input tax credit का benefit मुझे नहीं मिलेगा. So if manufacturer is purchasing raw material from outside sources, from the supplier, at that time he will whatever tax
he has paid to the supplier, it will be deducted when he is going to pay tax when he is selling the goods and services to wholesaler. So let us take an example. So manufacturer will purchase raw material of rupees 100. Okay, and by making the process on this raw material, he will sell the product at rupees 100 and 1200. So suppose that he is paying 20% of tax. That time 20% of 1200 is 240 rupees. So how much tax is paying? 240 rupees. And what is the actual value of this finished goods is 1200. So 1200 plus 240 is the amount of tax. Total sale value becomes 1440. Getting this? So this is the sale value. So add this sale value. What 1 minute? So add this sale value. I will sell this product to the retailers. Sorry, wholesaler. Okay, 1 minute. Yes. Now, so whatever is the sale value of 1400, 1440. So by adding my profit, I can sell this product to the wholesaler. Getting this? So during this manufacturing stage, how much tax manufacturer has to pay? That is 240 rupees tax manufacturer has to pay towards the government. Okay. So out of 1440, उसमें 1440 में 240 rupees tax के पे कर रहा है और 1200 रुपया ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्राइस है. So all entire amount of original cost as well as tax I have shifted towards the wholesaler. तो wholesaler क्या करेगा? He will make some of the processes or he will sell this product to the uh, by making the addition of profit, he will sell this product at rupees 1500 rupees. So again, at the time of selling this product towards the retailer, so basic cost of this product is 1500, 400, and he is liable to pay, for example, 20% of tax. तो 1500 का 20% किया तो 300 आता है. So sale value becomes 1500 plus 300 is equal to 1800. So out of this 1800, देखिए, try to understand how much tax he has to pay. That is 300 tax liability is 300 because 20% of 15,000 is 300 is the tax liability. But my actual tax liability is 300. Out of this 300 rupees, 240 rupees are already paid. Try to understand. Out of this 300 rupees is the actual tax liability of wholesaler. तो जो wholesaler का tax liability कितना है? 300 rupees, out of which 240 rupees are already paid by the manufacturer. Getting this? तो जितना भी amount मैंने manufacturer ने भरा रहेगा, I will get its credit. I will get its credit. Means what? I don't have need to pay is 240 rupees because it is already paid in the earlier stage. So what the amount which is already paid at the earlier stage, what you have to do? You have to just select it, that particular invoice. You have to select the amount. Automatically, the amount which is paid at the earlier stage, it will be deducted from your total tax liability, and amount of tax you will be paying, it is rupees 40 only. My actual tax liability is 300 rupees, but out of this 300 rupees, 240 rupees are already paid by the manufacturer. So the tax which is paid in the earlier stage, this will be credit to me. So how much tax liability, how much tax I need to pay to the government is 40 rupees only. Now the same value, look at the sale value of wholesaler is 1800 rupees, and I will send this product to the retailers per product. So 1800 rupees. Then retailer will add his margin and he will sell the product at rupees 2000. Then whenever he will sell the product at rupees 2000, at that time he will pay, he will charge
he will charge how much tax he will pay, and he will charge tax of 20%. So 20% of 2000 is equal to 400 rupees. So total sale value becomes, by addition of this tax, it becomes 204,000. Okay, within this 2,400, total tax liability is 400 rupees. Just look at, this is the total tax liability, out of which earlier tax कितना पे किया है wholesaler ने, 300 rupees, including ITC. So the tax which is already paid by the ITC, that is the wholesaler, in the form of input tax credit, this will be deducted. And whatever excuse I am getting to pay the income tax of rupees 300, this will be called as the input tax credit. So mera actual tax liability becomes 400 minus 300, which are already paid. It becomes 100 rupees. तो retailer को कितना पैसा payment करना पड़ेगा? Only 100 rupees. Okay. Now, after that, the same value of sale value will be charged on the customer. और उतना भी amount किससे हम लोग recovery करेंगे? 2,400 from the consumer. Now, whatever taxes we have got the excuses, means what? We need not to pay this tax because these are the tax which are already paid by the earlier taxpayer. That amount is called as the input tax credit. तो कंज्यूमर कितना पेमेंट कर रहा है? टोटल अमाउंट इज 1,400 rupees. Total amount of tax is 400 rupees. And what is the total value? So 2,400 minus 400, actual value of your product is only 2,000 rupees. Getting this? So in this way, this input tax credit system works. Okay, understand everybody? Yes, sir. ओके, यही हम लोगों का यही प्रोसेस मैंने क्या किया है यहाँ पे थ्योरी में डाला है. जस्ट 1 मिनट. तो इसको बोलते हैं आईटीसी. ओके, नाउ अभी देखिए व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट. अभी जो मैंने बताया ना वही यहाँ पे मैंने लिखा है. Now let us discuss, let us read out this. It is the tax paid by the buyer. Buyer ने पे किया हुआ tax on purchase of goods. When buyer is going to purchase the goods and services, at that time it is recovered from the buyer ना, जो कुछ buyer रहेगा. अगर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर में होलसेलर बायर रहेगा, होलसेलर और रिटेलर चेन में रिटेलर बायर रहेगा, रिटेलर और कंज्यूमर में कौन बायर रहेगा? कंज्यूमर बायर रहेगा. Getting this? So buyer ने पे किया हुआ tax. Buyer is the person who will buy the products, and at the time of buying the products, this entire tax will be collected from him. तो उसने भरा हुआ tax. Getting this? Buyer ने भरा हुआ tax on the purchase of goods and services, and such tax which is paid at the purchases when reduced from the liability payable on outward supplies. And input लेते समय मैं टैक्स पेमेंट करूंगा, और जितना भी मैंने टैक्स इनपुट लेते समय मैंने पे किया रहेगा वो आउटवर्ड सेल करते समय मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा. And when if you are a registered supplier or registered dealer, at that time whatever amount you are paying on the inputs of the goods and services, the same amount of excuses or same amount of credit you will get at the time of selling of your product. Getting this? So this is nothing but input tax credit. So whatever inputs we are getting, on which at the time of taking the inputs, whatever tax we have already paid, or at the earlier stages, we will get its excuses. Means what? Once again, no need to pay the tax. If I pay it again, at time it is called as the cascading effect and a double taxation effect, and this is not allowed. That's why input tax credit is available. So input tax credit is the tax reduced from the output tax payable. जितना भी tax liability जो मैंने अभी दिखाया ना, उसमें से tax का reduction मिलेगा. That is nothing but on account of sale. That is nothing but input tax credit. Okay, input tax credit means what?
time of paying tax on output when we can reduce the tax which is already paid by the input. अभी जो मैंने बताया वो तो already tax payment किया हुआ उसका मुझे क्या मिलेगी क्रेडिट मिलेगी means what there is no need to pay this tax. Then input tax credit mechanism is available to you when you are covered under GST Act. अगर आपका प्रोडक्ट आप लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अब जो उस प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं अगर दिस प्रोडक्ट कम्स अंडर जीएसटी एक्ट under GST Act 2017, if it is mentioned the name of that product, such product can available such product can avail the input tax credit. उसी प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा. Okay. Now, if you are a manufacturer, supplier, agent और e-commerce operator, जैसे कि Amazon, Flipkart ऐसे जो वेबसाइट्स है ना, e-commerce operator से बिजनेस करते हैं और रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, अगर इसके लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है. Those are the manufacturer who has not registered to whom this input tax credit facility will be not available. Getting this? For this purpose, you have to register under GST Act. You may be supplier, you may be manufacturer, you may be agent, or you may be e-commerce operator. You are doing your business through internet connect, through the internet or through internet technology. So you must be registered that time you will be eligible to claim the input credit. तभी आपको मिलेगा on your purchases. For example, you are the manufacturer. Tax payable on output of product is 450 rupees. Tax paid and on input you have paid the 300 rupees. इनपुट में आपने कितना पेमेंट किया माल बाय करते समय 300 किया और माल आउटपुट सप्लाई करते समय मेरी टैक्स लायबिलिटी आ गई 450. मेरी टैक्स लायबिलिटी कितना है 450. 450 rupees I will recover from wholesaler or I will recover from the retailer or I will recover from the my consumer. 450 rupees मैं उससे रिकवर करूंगा और टैक्स लायबिलिटी यानी पेमेंट करते समय मैं क्या करूंगा 450 is my tax liability. Out of this 450 rupees, 300 rupees are already paid by the earlier stages. तो 300 रुपए का मुझे क्या मिलेगा क्रेडिट मिलेगा. तो अल्टीमेटली हाउ मच अमाउंट आई हैव टू पे दैट इज 450 minus 300 is equal to 150 rupees I have to pay. So this is what input tax credit is. Okay, just look at this diagram. We have A, B, and C. Okay. Now on tax paid on purchase of A is rupees 100. Tax paid on purchase of rupees B is rupees 120 rupees, and tax paid on C is 80. So how much is the total tax liability? 100 plus 120 plus 80 is equal to 300. So total tax liability is 300, which I have paid when I purchase product A, product B, and product C. So by purchasing this as a raw material, I will sell the product into the market. At that time, my tax liability is amount of rupees 450. Means what? That much of tax I will recover from my consumer. At that time, out of this 450 rupees, how much tax you need to pay towards the government? Only 450 minus 300. 300 is the tax paid on my inputs. Input लेते समय पे किया हुआ टैक्स और अभी आउटपुट सेल आउट करते समय पे करने वाला टैक्स. तो ये दोनों में जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी माय इनपुट क्रेडिट. मुझे कितने का क्रेडिट मिलेगा 300 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा. तो मुझे 150 रुपीज आई हैव टू पे. So this is about the understanding of input tax credit. Okay. Now, who can claim the input tax credit under GST? The input tax credit का claim किसको मिलेगा? Who are the eligible? Who are the person eligible to get or to avail this input tax credit? So if you want to take the credit of input tax, at that time you must have a tax invoice of purchase. आपके पास आपने जो मटेरियल परचेस किया रहेगा उसका इनवॉइस कॉपी आपके पास रहेगी, वो होना चाहिए. If invoice copy is not available, invoice means what? Yes,
What is the invoice? Yes, sir. What is the invoice? What is mean by invoice? आम्हाला एक प्रॉडक्ट खरेदी केला असं त्याची आपल्याला एक रिसिप्ट मिळते तुम्ही किती Yes, correct. क्वांटिटी Yes, whenever you will buy a product at that time, you will get some proof of that particular details. आपके पास एक बिल दिया जाएगा. That bill is called as invoice. उसमें क्या है? कितने क्वांटिटी परचेस किए, कितना रेट लगाया, कौन से डेट को परचेस किए, किसने आपको दे दिया और उसके ऊपर कितना टैक्स लग गया, ये सारा कैलकुलेशन उसमें होता है. दैट इज द प्रूफ ऑफ टैक्स इनवॉइस. If you want to avail the credit of input tax credit, at that time you should have to hold the tax invoice. If you don't have a tax invoice, that time you will be not eligible. अगर इनो टैक्स इनवॉइस आपको नहीं मिला रहेगा, at that time your earlier manufacturer or your earlier wholesaler will issue the debit note. यानी आपका अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया रहेगा, जितना भी आपके ऊपर चार्ज लगाएगा उतने से वो क्या करेगा, आपका अकाउंट उसके अकाउंट में डेबिट करेगा. एंड दिस पर्सन, दिस मैन्युफैक्चरर विल इश्यू यू द डेबिट नोट गिवन बाय द रजिस्टर्ड डीलर. रजिस्टर्ड डीलर ने आपको डेबिट नोट देना चाहिए, ही शुड इश्यू यू द इनवॉइस कॉपी, तभी आपको इसका क्लेम मिलेगा. If you don't have a debit note or if you don't have an invoice, or that is the bill is the statement of your taxes and particulars of goods. अगर ये नहीं रहेगा तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा. Means what? You have to pay entire amount. ITC का क्लेम आपको नहीं मिलेगा. You should have a received goods or services. सिर्फ इनवॉइस बना के फायदा नहीं है. That goods will be delivered at your entry. आपको फिजिकल डिलीवरी होना चाहिए, गुड्स की डिलीवरी आपको होना चाहिए. So if by making only invoice it is not possible to get the credit, so here to get the credit, first you should have to prepare the invoice and goods should be received to you. Getting this? So you should have a delivery of these goods and services. अगर डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी का प्रूफ मेरे पास नहीं रहेगा, that time again it will be not getting the input tax credit. The tax charged on the purchases has been deposited. और जो परचेसेस ने, जो बायर ने पेमेंट किया हुआ टैक्स सप्लायर को, तो सप्लायर ने क्या करना चाहिए, जितना भी टैक्स चार्ज किया है बाइंग के ऊपर या परचेसेस के ऊपर, इट हैज बीन डिपॉजिटेड, तो उसने क्या करना चाहिए था, उतना अमाउंट अर्लियर स्टेज वाले जिसने मेरे पास से जीएसटी लिया है, उसने दैट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड, डिपॉजिट करना चाहिए और पेड टू द गवर्नमेंट. एक तो डिपॉजिट करना चाहिए उनके टैक्स सिस्टम में, जितना भी टैक्स वो चार्ज करेगा मेरे ऊपर, उतना अमाउंट ही हैज टू पे टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर इन कैश और वाया क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट. एक तो उसने पेमेंट करना पड़ेगा, अगर उसको क्रेडिट नहीं मिला रहेगा तो एंटायर अमाउंट ही हैज टू पे. अगर एज अ सप्लायर वो भी किसी और से रॉ मटेरियल परचेस करेगा, उसको भी सप्लायर का क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा. एक तो उसने पूरा अमाउंट भरना चाहिए, अगर उसका अर्लियर वाला कोई नहीं रहेगा तो. अगर खुद का ही रॉ मटेरियल है और खुद भी प्रोसेस कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू कांट गेट द इनपुट क्रेडिट फ्रॉम द अर्लियर स्टेज. अगर आपके प्रीवियस भी अगर कोई है तो उसका क्रेडिट भी आपको यहाँ पे मिलेगा. दिस as well as supplier has filled GST return. कब मिलेगा आपको IGST ITC? पहले आपके सप्लायर ने, जिसने टैक्स आपका कट किया है, उसने क्या करना चाहिए, पैसे जीएसटी के अकाउंट को भरना चाहिए, और along with this he has to file the GST return. उसने GST रिटर्न फाइल करना चाहिए, तभी जाके आपको नेक्स्ट स्टेज को क्या मिलेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. ओके, सब along with this जीएसटी रिटर्न तो फाइल करना है, उसके बाद तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी. और सप्लायर हैज अपलोडेड द इनवॉइस ऑफ देयर GSTR1. GSTR1 जो होता है सप्लायर का, तो सप्लायर ने क्या करना चाहिए, उसका अपलोड GSTR1 अपलोड करना चाहिए. एंड इट अपीयर्स इन द GSTR2 ऑफ द रिसिपेंट और द बायर. जो GSTR1 मेरा सप्लायर अपलोड करेगा,
उसमें क्या है, GSTR1 अपलोड करते समय मैंने माल किसको बेचा है उसका नाम लिखना है, उसका क्वांटिटी लिखना है, उसका रेट लिखना है और कितना चार्ज किया टैक्स वो भी लिखना है. मीन्स व्हाट हियर, my name is there in the name in the invoice or in the GSTR1 of supplier. Supplier ने GSTR1 भरा है ना, उसमें मेरा नाम रहेगा. Getting this? So he has been uploaded this invoice which is prepared on the purchase of raw material by me, and it appears, और जितना भी सप्लायर ने जितना भी GSTR1 सबमिट करने के बाद when I go, अभी क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सप्लायर पहले GSTR1 माल बेचने के बाद सप्लायर क्या करेगा, उसका इनवॉइस अपलोड करेगा. जो इनवॉइस मुझे दिया है उसका एक कॉपी वो क्या करेगा, वहां पे जाके उसके पोर्टल को क्या करेगा, GSTN नेटवर्क को अपलोड करेगा. उसमें सब कुछ डिटेल, किसको माल बेचा, कितना बेचा, कौन से डेट को बेचा, GST कितना लगा, ये सब कुछ है. उसमें एक बार मैंने उसका नाम, उसने मेरा नाम डालने के बाद आई हैव GSTN नंबर है ना, यूनिक नंबर होता है, तो वो नंबर मुझे सिलेक्ट करना है. आई हैव टू सिलेक्ट द बायर. So automatically what will happen, whatever information I have uploaded at my end, this will be reflected into GSTR2B of the recipient or the buyer. वही information buyer को buyer के अकाउंट में अपलोड होगी, वही information buyer के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. Getting this? तो buyer क्या करेगा, buyer will have to fill GSTR2B. GSTR2 बायर को भी भरना है, सप्लायर को GSTR1 भरना है एंड बायर को GSTR2 भरना है. यानी बाय किया हुआ मटेरियल ड्यूरिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग 1 मंथ, आई हैव टू गिव द डिटेल्स. बाय करते समय कहां से किया, कितना किया, ये सब कुछ जो कुछ मेरे सप्लायर ने भरा रहेगा वही इंफॉर्मेशन उधर भी आएगी. As a buyer, what you have to do, you have to just cross check जो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया रहेगा whether it is correct or not, and you have to just click on agree button. अगर सारे रेट, GST सब कुछ अगर सही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एग्री करेंगे. तो उसने वही अगर मैच होते, मेरा इनवॉइस, सप्लायर का इनवॉइस और मेरा जो इनपुट जो रॉ मटेरियल परचेस करूंगा उसका इनवॉइस, तो अगर एक दूसरे को मैच होता है तभी हम लोगों को क्या मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है. अगर दोनों में स्पेलिंग एरर रहेगा, अमाउंट में कुछ मिस्टेक रहेगी, दैट टाइम इट विल शो द पॉपअप, वो एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा. गेटिंग दिस? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सप्लायर ने GSTR1 पहले अपलोड करना चाहिए. GSTR1 में क्या है, मेरे बायर्स का डिटेल्स है. गेटिंग दिस? और एक बार वो अपलोड करने के बाद जो कुछ सप्लायर ने डिटेल्स भर दिए वही डिटेल्स बायर के भी GSTN नेटवर्क को दिखने को मिलेगी. तो बायर को क्या करना है, जो कुछ अमाउंट रहेगा, क्वांटिटी रहेगी, सबको टिक मार करके यस या एग्री बोलना है. वो एग्री होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यू विल बी एलिजिबल टू गेट द GST क्रेडिट. अगर सप्लायर का क्रेडिट, सप्लायर ने भरा हुआ इंफॉर्मेशन, इनवॉइस अपलोड किया हुआ इंफॉर्मेशन और मेरा जनरेट होने वाला GSTR2B, अगर उसमें कुछ भी मिसमैचिंग रहेगा, at that time this credit will be not available to you. Getting this? Now input tax credit cannot be taken on purchase of invoice which are more than 1 year. एक साल के पुराने वाले ट्रांजैक्शन का इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी नहीं मिलेगा. You have to there because certain limit has been set. नंबर ऑफ डेज में कितने दिन में लेना है, दैट इज ऑल्सो मेंशन. And I can't get the input tax credit of last year. I have to take the input tax credit of the same current year. Getting this? Last year का more than 1 year वाला कौन सा भी ट्रांजेक्शन का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है तो मुझे पूरा पैसा भरना पड़ेगा, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ डीलर और एज अ होलसेलर और एज अ रिटेलर. अर्लियर टैक्स सिस्टम में जो जितना पैसा भरा उसका क्रेडिट मुझे इधर नहीं मिलेगा अगर वो दोनों में मिसमैचिंग रहेगा. The period is calculated from the date of tax of invoice. कौन से डेट को मैंने इनवॉइस बनाया उसके एक साल अंदर तक उसका क्या मिलेगा,
क्रेडिट मिलेगा। अगर 1 साल के बाद वो अगर आगे जाता है एट दैट टाइम इट विल बी नॉट अलाउड टू गेट द इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। So input tax credit is allowed on the capital goods as well. Capital goods means what? Goods which we are going to purchase in the form of fixed assets, on which also we will get the input tax credit, like machinery, like any kind of fixed asset. Whenever you will be getting, it is not only on your raw material. It will be not only on your revenue goods. So we will take this on the capital goods as well. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल। जो हम लोग पर्सनल यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज अगर यूज करेंगे तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। these are the various conditions where इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते समय देखिए which tax credit I will utilize to pay the input tax credit. See, to pay IGST, मुझे IGST पेमेंट करना है। IGST किसके पास जाती है और कब होता है IGST? When I need to pay the IGST, just tell me fast. When I have to pay IGST, कौन से ट्रांजेक्शन को हम लोगों को IGST पेमेंट करना पड़ता है? How many students are attending the lecture? 9 students are there. Yes, tell me. जो हमें IGST स्टेट के साथ किसी अलग कुछ ट्रांजेक्शन करनी हो तब IGST लगता है। Yes, who is speaking? ओमकार। Okay, Omkar, it's correct. So whenever you are sending goods and services from one state to other state, at that time I have to pay IGST. ठीक है? तो मैं अगर मान लो मैं IGST मैंने माल किधर से भेजा, फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई से गुजरात माल भेजा, तभी मुझे IGST पेमेंट करना है। गेटिंग दिस? ये इतना जिसका जो अमाउंट है IGST का वो मैं क्या करूंगा, मैं जो गुजरात को माल भेजा है ना मुंबई को, तो वो जितना भी अमाउंट रहेगा वो मेरा जो गुजरात का कस्टमर है उससे रिकवर करूंगा। गेटिंग दिस? हु इज गोइंग टू पे द अमाउंट? The person who is buying my goods, and कहाँ का है वो, रहने वाला गुजरात का है। The person who is purchasing goods and services, he has to pay this tax of IGST. और वो कौन भरेगा? I have to pay this IGST towards the central government. IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है at the time of deciding my tax liability. ऐसा भी कुछ रहेगा कि कुछ गुड्स मैंने भी परचेस किए रहेंगे दूसरे स्टेट से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ गुड्स ऐसे भी रहेंगे ना, यहाँ पे देखिए मुंबई का मैन्युफैक्चरर गुजरात को माल सेंड कर रहा है। एट दैट टाइम हु इज पेइंग द टैक्स? दैट द पर्सन फ्रॉम गुजरात, he has to pay IGST. Bring this. एंड वही अमाउंट किससे रिकवर हो रही है? गुजरात से रिकवरी हो रहा है। और वो जो कुछ टैक्स पेमेंट करेगा, वो कुछ जो टैक्स पेमेंट करेगा उसका एक हिस्सा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और दूसरा हिस्सा जाएगा गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा। मुंबई को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स। कौन से स्टेट में वो माल सप्लाई होता है उसी स्टेट को मुझे क्या करना है? IGST पेमेंट कराना है। उसी स्टेट को उसका क्रेडिट या उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी अगर मुझे IGST पेमेंट करना है तो आई हैव टू पे IGST टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो मुझे कितना पेमेंट करना है IGST का? 400 रुपए पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। अगर 400 रुपए का पेमेंट करना है, एट दैट टाइम आई वुड हैव सर्टेन क्रेडिट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST और CGST और SGST। तो IGST का पेमेंट करने के लिए मेरे पास अगर CGST का क्रेडिट रहेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा, IGST का अगर कुछ क्रेडिट रहेगा या SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा, दैट टाइम आई कैन यूज दिस टू मेक द कॉम्पेंसेशन। मुझे गवर्नमेंट को कितना देना है? 400 रुपये देना है, बट आई कैन अवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST, IGST और SGST। उसका मेरे पास जितना भी क्रेडिट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 200 रुपए का क्रेडिट है और 100 रुपीज का क्रेडिट है, ओके, तो आई कैन यूज दिस। तो मुझे एक्चुअल IGST कितना पेमेंट करना है? 400 minus 100 is equal to 300 rupees that I have to pay. Try to understand. इसका मतलब
आईजीएसटी, एसजीएसटी का, सीजीएसटी का और आईजीएसटी का जो मेरे पास क्रेडिट था, अनयूटिलाइज क्रेडिट, I will deduct this amount from my total tax liability of IGST. Getting this? तो IGST का पेमेंट करने के लिए मैं कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकता? IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी पेड ऑन द परचेसेस, परचेस करते समय आपने जितना भी टैक्स पेमेंट किया रहेगा उसका आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा और वही क्रेडिट आप एडजस्ट कर सकते हैं। So this is about IGST. Then CGST पेमेंट करते समय आउटपुट अगर एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना है इन द फॉर्म ऑफ CGST। तो CGST का मेरा टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए आई कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST। अगर CGST का मेरे पास कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट है या IGST का क्रेडिट रहेगा ऑन माय परचेसेस, दिस आई कैन यूज। Then to pay the SGST, SGST का अगर मुझे टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करना है एज अ अर्लियर स्टेज मैन्युफैक्चरर, तो मुझे SGST का पेमेंट करने के लिए मुझे SGST का आउटपुट लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए मुझे SGST का इनपुट मुझे ये मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और आई कैन यूज IGST इनपुट ऑन द परचेसेस। तो परचेसेस के ऊपर जितना भी मैंने टैक्स पेमेंट किया रहेगा उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। So this is how we can use the input credit. Okay. So for example, just look at this slide. Just go through this entire slide. The diagram which is there, I have explained here. Just read this carefully, then we will discuss. Done. Gone through this slide. Yes, sir. अभी देखिए इनपुट टैक्स प्रोसेस होती है कैसे। जो कुछ सेलर रहेगा, सेलर को कौन सा फॉर्म भरना है, GSTR1 भरना है। And once the GSTR1 is filled by the seller, the same information will be reflected into the GSTR2 of B file. देखो GSTR1 भरना है, 1 is the outward of your supply, 1 किसके लिए है, outward of supply, और GSTR2 किसके लिए, इनवर्ड ऑफ योर सप्लाई, इनवर्ड ऑफ योर सप्लाई। आपका सप्लाई इनवर्ड कर रहे हैं आप लोग, यानी बाय कर रहे हैं, तो बायर GSTR2 भरेगा और सेलर GSTR1 भरेगा।
GSTR 1 में क्या हुआ है, बायर का सब कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने फिलअप किया है. Doing this, once the GSTR 1 is uploaded by the seller, automatically it will get reflected into the GSTR 2 of buyer. GSTR 2 जब बायर भरने के लिए जाएगा ना, तब ये सारा इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, यानी उधर आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. उसको क्या करना है, he has to just select or he has to just cross check it whether the supplier has filled the entries correct or not. Okay, तो सेलर को कौन सा भरना है, GSTR 1 भरना है. GSTR 1 में ऑटोमेटिकली सारा इंफॉर्मेशन मेरे बायर का रहता है. तो सेलर को कौन से आउटवर्ड ऑफ सप्लाई के लिए GSTR 1 भरना है, और GSTR 2 ये बी, मिस्टर बी क्या करेगा, जितना भी इनवर्ड किया सप्लाई आपने, उसके लिए GSTR है, GSTR 2B, 2A. As a buyer, if all the details filled by the supplier, if these are correct, then I have to accept it and I have to upload this. Okay, ये भरने के बाद क्या हो जाएगा, amount of tax paid on the purchases. तो जितने भी टैक्सेस उसने पे किए रहेंगे on the purchases, किसने, सेलर ने, जितने भी टैक्सेस उसने ऑलरेडी पे किए रहेंगे, this will be credited to electronic credit register. तो आपके खाते में आ जाएंगे उतने amount. And that much amount you will get the refund. तो उतना आपको टैक्स रिफंड मिलेगा in the form of credit, input tax credit. उतना अमाउंट आपको भरने की जरूरी नहीं. Now let us go through the various steps. Mr. A will upload the details of all tax invoices issued in the GSTR 1 में सारे इंफॉर्मेशन भरेगा. दूसरा स्टेप क्या है, the details with respect to the sales of Mr. B will auto populate. तो Mr. B को जितना भी माल अपलोड सेल आउट किया है, वो auto populate होकर रिफ्लेक्ट GSTR 2A or 2B में जाएगा. The same data will be pulled when Mr. B will file GSTR 2. GSTR 2 जब वो Mr. B फाइल करने के लिए जाएगा, GSTR 2 is related to inputs and GSTR 1 is related to your outputs. Try to understand the difference between GSTR 1 and GSTR 2. हर एक टैक्स भरने की प्रोसेस अलग है, ड्यू डेट्स अलग अलग है. तो बायर को हमेशा GSTR 2 भरना है, और सेलर को when he sell the goods and services at that time he has to fill the GSTR 1. अभी मिस्टर बी क्या करेगा, देखिए, मिस्टर बी विल जस्ट रिफ्लेक्टेड इंफॉर्मेशन, ही हैज टू एक्सेप्ट द डिटेल्स दैट द परचेस हैज बीन मेड एंड रिपोर्टेड बाय द सेलर करेक्टली. उसने किया हुआ सब कुछ इंफॉर्मेशन करेक्ट है, उसको अगर मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली द अमाउंट व्हिच इज ऑलरेडी पेड बाय द सेलर, इट विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतनी अमाउंट जमा हो जाए. तो जितना भी अमाउंट आप में आपके क्रेडिट लेजर में जमा हुआ रहेगा, that much amount will reduce your tax liability and you will get the refund of this input tax credit. This is how the process works. This is the process of input tax credit. Okay, अभी input tax credit के rules क्या है, देखिए, already we had discussed some of this. Okay, तो buyer को क्या चाहिए, buyer अगर input tax credit लेना चाहता है, तो उसके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस बिल होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए, as well as any kinds of document if he is getting at that time. Both should be a registered dealer. दोनों भी रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, तभी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. दूसरा क्या होना चाहिए, बायर मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स. बायर को गुड्स मिलने चाहिए, फिजिकल डिलीवरी होना चाहिए. देन एंड देन यू विल अप्लाई फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. देन अगर प्रोडक्ट इज बीइंग रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में अगर मिला रहेगा, इन केस ऑफ सर्विसेज वी कांट गेट द 100% सर्विसेज एट टाइम, यू विल गेट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द सर्विसेज इन इंस्टॉलमेंट. एट दैट टाइम क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस फॉर द लास्ट इनवॉइस इंस्टॉलमेंट. जब तक लास्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं जाती, तब तक हमको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. as well as next, supplier must have paid the tax. सप्लायर ने टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा. अगर सप्लायर का टैक्स पेमेंट बाकी रहेगा, तो the amount will be not reflected into my electronic credit ledger. अगर उसने अर्लियर स्टेज को
उसका टैक्स लायबिलिटी नहीं भरा रहेगा तो मेरे इसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स ड्यू ऑन द बायर्स परचेस टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को उसने टैक्स पेमेंट नहीं किया रहेगा दैट टाइम आइदर इन कैश और क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, तब उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। फाइनली सप्लायर मस्ट हैव फाइल्ड द जीएसटी रिटर्न। सप्लायर ने उसका जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर उसका कंप्लीट रहेगा तो मेरे यहाँ पे उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। So supplier has to file the GST return 1. So you are allowed to claim input tax credit on your purchases only if your supplier has paid the tax they had collected from you. आपसे जितना भी टैक्स उसने कलेक्ट किया रहेगा, he must have to pay this tax at his portal through GSTR 1. तभी जाके मेरे लिए वो दिखेगा। तो इसमें इनवॉइसेस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, जीएसटीआर 1 उसने भरना चाहिए और वो रजिस्टर्ड पर्सन भी होना चाहिए। दीज आर द बेसिक रूल्स। नाउ इसका जो क्रेडिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, बायर शुड पे सप्लायर फॉर द सप्लाईज रिसीव्ड विद इन 180 डेज। बायर ने अमाउंट सप्लायर को 180 दिन में देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग द सप्लाई। To claim ITC, to claim ITC as a buyer, I have to make the payment of my supplier within 180 days. अगर 180 days में उसका मेरा पेमेंट उसको नहीं जाता है, at that time I can't avail the credit. Try to understand. तो मुझे भी पेमेंट करने का टैक्स लायबिलिटी, मुझे भी पेमेंट करने का लायबिलिटी कंपल्सन है। कितने 180 days मीन्स व्हाट 6 months के अंदर मुझे उसका पेमेंट करना चाहिए। किसका? बायर। द बायर फेल टू डू सो, अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया, अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट वुड बी हैव बीन अवेल्ड विल बी एडेड टू देयर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। उतना अमाउंट क्या जाएगा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपका बढ़ेगा। उतने अमाउंट आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। Once the buyer pays the amount due to the supplier, supplier का buyer payment करेगा by the taxpayer, they will able to avail the ITC यानी input tax credit. In case of partial payment, credit proportionate to the payment can be availed. Partial payment अगर रहेगा तो उसके हिसाब से ही credit मिलेगा. So these are the basic input tax credit rules. Okay. Now अभी ये input tax credit लेने के लिए मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? Which kind of documents I have to upload or I have to hold? The first one is that tax invoice issued by the registered supplier. जो सप्लायर ने मुझे सप्लायर से मैंने माल लिया है उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा that time you will not get the input tax credit. So to avail this input tax credit, I have to find such a supplier who is already registered. दूसरा चीज टैक्स इनवॉइस उसने इशू करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो डेबिट नोट इशू करना चाहिए सप्लायर ने। उसके बाद an invoice issued by the recipient of the goods or services who has paid tax under reverse charge mechanism. या तो रेसिपेंट यानी एक तो बायर ने उसको इनवॉइस बना के सॉरी सेलर ने देना चाहिए या टैक्स इनवॉइस सेलर ने देना चाहिए, नहीं तो डेबिट नोट इशू करना चाहिए सेलर ने। अगर दोनों भी नहीं किया सेलर ने तो बायर ने क्या करना चाहिए? रेसिपेंट ऑफ गुड्स का इनवॉइसेस सबमिट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। अगर बायर नहीं कर पाता है तो सॉरी सेलर नहीं कर पाता है तो बायर को करना पड़ेगा। Then a bill of entry or similar documents in case of import. अगर import किया रहेगा, goods imports किए रहेंगे तो उसकी कौन सी bill of entry आपके पास, it is the like statement of your bill, so that you have to also hold. An invoice or credit note issued by the input service distributor. तो input service distributor या होते हैं यानी जो suppliers होते हैं registered suppliers. You means what? You are not manufacturer, you are just supplier and you are registered as a supplier. उसको क्या बोलते हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूटर का रोल निभाते हैं, उनका तो क्रेडिट नोट होना चाहिए। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहला टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, नहीं तो बायर का रेसिपेंट ऑफ गुड्स का स्टेटमेंट होना चाहिए,
अगर गुड्स इंपोर्ट किए रहेंगे तो बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा या सर्विस प्रोवाइडर कोई कंपनी रहेगी तो उसका इनवॉइस और क्रेडिट नोट उसने इश्यू करना चाहिए। सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स देन एंड देन यू विल गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी देखिए पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न्स, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। तो GSTR 1 इज रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय द टैक्स पेयर। आउटवर्ड सप्लाई का GSTR 1 आउटवर्ड के बारे में होता है, वो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ को भरना है, यानी फरवरी का आउटवर्ड जितना भी सेल किया रहेगा उसकी एंट्री मार्च के 10 तारीख के पहले होना चाहिए। GSTR 2 इज रिलेटेड टू इनवर्ड ऑफ सप्लाई, इनवर्ड यानी बायर के लिए होता है ये। तो बायर को क्या करेगा, 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फरवरी का इनवर्ड, फरवरी में जितना भी माल इनवर्ड किया रहेगा उसका मुझे कब एंट्री करना है, 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के 5 तारीख के तक करना है। Then GSTR 3 is related to monthly return। ये मंथली रिटर्न कब भरना है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी फरवरी के जितने भी रिटर्न्स रहेंगे, अगर मेरा मंथ मोड ऑफ पेमेंट में मोड ऑफ मेकिंग द रिटर्न अगर मंथली रहेगा तो मार्च के 20 तारीख तक करना चाहिए। दिस इज अबाउट supplier। Then GSTR 4 is related to quarterly return for the taxpayer under composite scheme। कंपोजिट स्कीम में के अंडर ये क्वार्टरली रिटर्न भरना है, मंथली नहीं भरना है, और उसको कब करना है, 18th ऑफ द मंथ टू द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर के 18th डेट को तब तक क्वार्टरली रिटर्न आपने भरना चाहिए, क्वार्टर वाइज करना है। GSTR 5 is related to periodic return by the non-resident foreign taxpayer। जो फॉरेन का नागरिक है, फॉरेन टैक्स पेयर है, उसको GSTR 5 पे पेमेंट करना है, 5 रिटर्न करना है, और वो कब करना है, 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी लास्ट डेट का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कैसा है, 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका कौन सा रहेगा, उसके बाद 7 दिन में होना चाहिए, और 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ आफ्टर द कंप्लीटेड मंथ, एक महीना कंप्लीट होने के बाद 20 तारीख तक उसका जाना चाहिए। Then this is something about periodic return by the non-resident। GSTR 6 क्या है, रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अभी हम लोगों ने देखा ना, सप्लायर के लिए होता है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हर महीने की 13 तारीख को जाना चाहिए। Then GSTR 7 is रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो जाना चाहिए 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को जाना चाहिए। Then GSTR 8 is return filed by the e-commerce operator like Amazon, Flipkart। Then कौन सी कंपनी है, और इसके लिए जो इंटरनेट से बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, उनको हर महीने के 10 तारीख को रिटर्न फाइल करने हैं इन द फॉर्म ऑफ GSTR 1। फॉर्मेट ऑफ ईच एंड एवरी फॉर्म इज डिफरेंट। Then GSTR 9 this form is related to your annual return। मंथली भरा है उसको एनुअल में एक बार अगर भरना है तो एनुअल रिटर्न्स के लिए होता है, एंड दिस विल बी 30th दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 तारीख तक भरना है, 30 दिसंबर तक आपको भरना है। एंड GSTR 10 is will be your final return, and this you have to pay on 20th of the succeeding month। succeeding month के 20th को GSTR 1 है, 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, हर एक के लिए, हर एक सप्लायर के लिए, हर एक बायर के लिए अलग अलग टर्म्स। I think we have finished our time, so let us stop here। To the next lecture we will go for reversal of input tax credit। रिवर्स यानी अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर किसको नहीं मिला है, उसको अगर उसको मिला है लेकिन is not eligible, at that time you can make the reversal, रिवर्स कर देगा। ओके, तो रिवर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, that we will see।
देन टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी हम लोग देखेंगे। और नेगेटिव लिस्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, व्हिच आर द एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता, इसलिए नेगेटिव लिस्ट में आया है। इसलिए टैक्स नहीं लगता है, इसका मतलब जीएसटी का इनपुट भी नहीं मिलेगा। गेटिंग दिस? So let us stop here. See you to the next lecture. Thank you so much.